Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will be discussing what is Node.js. Is Node.js a framework or a library? Before moving on to Node.js, हमें ये पता होना चाहिए कि JS क्या है, JavaScript क्या है. So basically, JavaScript is a programming language that is used on web browsers. So web browsers पे ये रन होती है and web browser basically JavaScript इंजन को यूज़ कर रहे होते हैं JavaScript को रन करने के लिए. For example, गूगल क्रोम का अपना V8 इंजन होता है, फायरफॉक्स का स्पाइडर मोंकी इंजन होता है एंड सफारी के पास मैक का अपना जावास्क्रिप्ट इंजन होता है. एंड इनमें से सबसे फेमस इंजन जो हमारे पास है वो V8 इंजन है गूगल क्रोम का, एंड विच इज़ एक्चुअली ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज़. इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट इन दैट. सो बेसिकली इन 2009 our software engineer named Ryan uses that V8 engine and embed that engine inside a C++ code. So इससे हमें क्या एडवांटेज हुआ कि बिफोर दैट JavaScript कैन ओनली बी एबल टू रन ऑन वेब ब्राउजर्स, बट आफ्टर दिस एज यू नो दिस C++ कैन रन ऑन एनी सर्वर एनी मशीन. तो अब JavaScript was able to run on any machine. So basically now you can understand what is Node. Node is actually a environment कि एक environment है कि जिसके अंदर हम JavaScript को रन कर सकते हैं. And to prove this, let's open up a new tab and go to console and try to run JavaScript here. And if we say console.log hello, see we have a hello here. What it is actually doing is कि ये V8 इंजन को यूज़ करके JavaScript को रन कर रहे हैं इधर, ठीक है. एंड लेट्स ट्राई ऑन टर्मिनल. हम अगर टर्मिनल पे ट्राई करेंगे तो हमें ये मोस्ट प्रोबेबली एरर शो करेगा. console.log hello, it shows syntax error. Let's try to run node. Node is actually installed on my system. तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट स्टार्ट कर देगा नोड का. एंड नाउ वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट ऑन आवर मशीन एंड वी से हेलो. सी अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट रन हो रही है हमारी मशीन पे. सो व्हाट नोड इज़ एक्चुअली, नोड इज़ बेसिकली अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट जो यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी रन करने के लिए. इट कैन रन जावास्क्रिप्ट एंड एवरीवेयर. One more important thing about Node is कि Node is also open source and free. You can actually also contribute in Node.js too. If you can see, अगर आप GitHub पे जाके Node को सर्च करेंगे you can find it repository और आप इस पर contribute कर भी सकते हैं. There are these number of members, contributors, and you can be the next contributor too. If you like this video, do like this, do share with your friends, and do subscribe my channel. I will see you in my next video.